Good to see you all again. And as we all know, we are now learning about work and energy, right? So we'll continue with this chapter, students. In the previous lecture, students, if you can recall, we have already spoke about what is work and what is energy. Energy के बारे में बात किया था last lecture में. If you can recall, students, energy is capacity to do work. If you have to do work, what you need is you need energy. अगर आपके पास energy नहीं होगा, you won't be able to work, right? So we have defined what is energy, and also we have spoke about different forms of energy. We know the energy can be of different forms. That is, it can be heat, it can be light, it can be sound, it can be electricity. So ये सारे जो energies है वो सारे different forms of energies है, right? But among those students we are going to talk about two different types of energy, जिसमें हमने पहला type of energy देखा kinetic energy. कौन सा देखा? Kinetic energy. Now kinetic energy is the energy which is possessed by a body when it is in dash. Kinetic energy is the energy possessed by a body when it is in dash, when the body is in motion. Correct. काइनेटिक एनर्जी हम लोग तभी बोलेंगे बॉडी के पास है जब भी बॉडी मोशन में रहेगा, राइट? व्हेन द बॉडी इज इन मोशन वी से दैट द बॉडी कंटेन्स काइनेटिक एनर्जी. Whereas we also spoke about how we derive the formula for kinetic energy. Can you recall what is formula for kinetic energy, students? Can you recall what is formula for kinetic energy? Formula for kinetic energy. Kinetic energy is equals to हाफ एम वी स्क्वेयर. क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाइड बाय एम मतलब मास, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर मतलब वेलोसिटी स्क्वेयर, मल्टीप्लाइड बाय वी स्क्वेयर मतलब वेलोसिटी स्क्वेयर, राइट? नाउ स्टूडेंट्स, based on that what we are going to do is we are going to start the numericals, right? Now based on that we are going to start with the numericals. So we are going to see the numerical based on kinetic energy. What are we going to see? We are going to see the numerical based on kinetic energy. All right. So you may see the screen. You may see the screen in front of in you may just look at the screen, students. On the screen what you can see is you can see a sum, right? On the screen we have a sum. Let us look into that sum, students. Let us look into that sum. We'll solve the sum and move with the next part of the chapter, right? Chalo. So let us look at the sum, students, right? The sum says a stone having mass of 250 gram. Achha, you are going to solve it along with me, students. You are going to solve this question along with me. बहुत simple question है, बहुत easy question है, right? We are going to look at that and we are going to see how to solve this, right? Acha. So the question says a stone having mass of 250 gram falls from a height. Now what we have is we have a stone जिसका mass दिया है. What are we given, students? We are given mass. So if I write the given data, students, so in the given data what I see is I see the mass of the stone. कितना mass दिया है? Mass is 250 grams. So in this given data, yes, this is a solved example. In this given data, students, mass कितना है? 250 gram. Mass कितना है? 250 gram, right? अच्छा, अभी ये stone का mass दिया है, students, but this mass which is in gram, is it acceptable, students? The mass which is in gram, is it acceptable? नहीं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो बेटा मास किस में होना चाहिए? मास ग्राम में ना होके मास शुड बी इन केजी. किस में होना चाहिए? मास केजी में होना चाहिए. नाउ स्टूडेंट्स, वी ऑल नो दैट what is 1 kg equals to 1 kg is equals to how many grams? 1 kg is 1000 gram. तो स्टूडेंट्स मुझे 250 ग्राम कितना है ये ढूंढना होगा. तो व्हाट आई डू इज, स्टूडेंट्स, ये 250 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना होगा. तो व्हाट आई डू इज 250 डिवाइड बाय 1000 करूंगा. क्या करूंगा? 250 डिवाइड बाय 1000.
So what I get is I get mass in kg. What do I get? I get mass in kg, right? अच्छा, जब भी आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हो स्टूडेंट्स, रिमेंबर वेरी केयरफुली, whenever you go from smaller unit to bigger unit, what you are supposed to do is you have to divide. क्या करना है आपको? डिवाइड करना है, राइट? अगर मुझे केजी से ग्राम में जाना होता तो मैं क्या करता, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करता. क्या करता? 1000 से मल्टीप्लाई करता, राइट? अच्छा, now what I do is I do not do anything to this students. I keep this 250 upon 1000 as it is. I keep this 250 upon 1000 as it is because any which ways we are going to look into the calculations later on, right? Acha. 4 is not the answer. 4 is not the answer. Sorry, 4 is not the answer. All right. Chalo. Now, the question says a stone having mass of 250 gram falls from the height. How much kinetic energy does it have at the moment when its velocity is 2 meter per second? उन्होंने clearly पूछा how much kinetic energy. So what are we supposed to find, students? We are supposed to find kinetic energy. What are we supposed to find? Kinetic energy, right? Kinetic energy ढूंढना है. अच्छा, kinetic energy कब ढूंढना है students? When the velocity is 2 meter per second. When the velocity is 2 meter per second. तो v कितना दिया है स्टूडेंट्स? v is equals to 2 meter per second. v is how much? 2 meter per second. Now students, we have mass, we have velocity, and we have to find kinetic energy. Can anyone tell me the formula we are going to use to find kinetic energy? Can anyone tell me the formula which we are going to use to find kinetic energy? Absolutely, we are going to use kinetic energy is equals to half multiplied by m multiplied by v square, that is half mv square. So this is the formula we are going to use. Now if you see the given data students, मेरे पास mass दिया है, मेरे पास velocity दिया है, I need to find kinetic energy. Is it possible for me to find kinetic energy, students? Is it possible for me to find kinetic energy? All right, I can find kinetic energy. Please substitute the value, students. Everybody, please substitute the value. Substitute the value. So what we do is we write the solution. So solution में kinetic energy वैसे का वैसा, because that is what we have to find, is equals to 1/2 मैंने multiply किया, multiplied by. Now students, मुझे mass 250 लेना है या 250 upon 1000 लेना है students? Do I have to take mass as 250 or 250 upon 1000? I have to take mass as 250 upon 1000 kg. मुझे mass kg में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? m के जगह पे 250 upon 1000 लिखूंगा, multiplied by v square. Velocity is 2. Velocity का square will be 2 square, that is 4. Velocity का square will be 2 square, that is 4. So this is the substitution what I have. बहुत simple substitution है. अभी 2 and 4 cancel हो जाएगा. Since बीच में multiplication sign है students, we can cancel off things, right? अगर बीच में प्लस या माइनस साइन होता तो कैंसिल अपन नहीं कर सकते थे. तो 2 1 2 2 4. अभी यहाँ पे देखोगे तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये भी जीरो कैंसिल हो जाएगा. 25 के टेबल में 100 आता है क्या? यस, 25 के टेबल में 100 आता है. 25 1 25, 25 4 100. So what are we left with? 2 in the numerator, 4 in the denominator. तो 2 and 4 भी कैंसिल हो सकता है स्टूडेंट्स. 2 1 2 and 2 2 4. So what are we left with? Kinetic energy is equals to 1. न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है, देखो न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा है, so 1 बचा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा है स्टूडेंट्स? डिनोमिनेटर में क्या बचा है? 2 बचा है. So what I have is 1/2, that is equals to 1/2 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो 1/2 is nothing but 0.5. क्या आता है? 0.5. And what is the unit of kinetic energy, students? What is the unit of energy? The unit of energy is joule. तो आप either capital letter J लिखो या तो small में सारा JOULE लिख दो, right? So this is the sum which is based on kinetic energy. So this is the sum which is based on kinetic
energy. I hope you understood this sum. This is a very simple sum which you can solve by using the formula, right? So students, as we have explained about the kinetic energy, Abhi, we are going to move towards potential energy. Students, what are we going to move towards? We are now going to move towards potential energy. अभी पोटेंशियल एनर्जी है ना स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी आर ऑफ टू टाइप्स. हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स. Now this particular concept which I'm going to about to tell you is not in your textbook. Just understand this. पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टूडेंट्स, दो टाइप का होता है. पोटेंशियल एनर्जी इज टू टाइप. फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. फर्स्ट इज gravitational potential energy, and the second one is elastic potential energy. Second कौन सा है? elastic potential energy. Now let us understand what is this potential energy first. So students, let us first talk about elastic potential energy. So abhi now what I have here is, students, I have a rubber band here. What do I have? I have a rubber band here. Now we all know that ये जो rubber band होता है, it has a elastic property. Yes or no? ये rubber band के पास होता है elastic property. So students, what I do is I stretch this rubber band. Students, what I do is I stretch this rubber band. Now when I stretch this rubber band, of course ये rubber band क्या होगा? Stretch होगा, because it has elastic property. Now what I am doing is, students, I am applying the force जिसके वजह से रबर बैंड ने डिस्प्लेसमेंट दिखाया. मीनिंग, कैन आई से द वर्क इज डन? स्टूडेंट्स, कैन आई से द वर्क इज डन? Yes, when I stretch this rubber band, I can say that the work is done. Now students, whenever I do work on an elastic body, ये बॉडी ने क्या किया? एक एनर्जी गेन किया. क्या किया? एनर्जी गेन किया. क्योंकि अगर मैंने इस रबर बैंड को छोड़ दिया तो रबर बैंड क्या हो जाएगा? अपने वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. ये सब नो, रबर बैंड क्या होगा? वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा. The rubber band is able to come on its original shape because it has a stored energy into it. It has a stored energy inside it when I do the work. And that stored energy inside the rubber band, when I stretch it, is called as elastic potential energy. What is it called as? Elastic potential energy. Is that clear? So potential energies are of two types. The first type of potential energy is the elastic potential energy, and the second type of potential energy is gravitational potential energy. Now, elastic potential energy is something which we are not going to look into. We are going to talk about gravitational potential energy, जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर बेस्ड होता है, या ऑब्जेक्ट के पोजीशन के ऊपर डिपेंड रहता है. सो लेट अस से स्टूडेंट्स, ये जो पेन है, दिस इज प्लेस्ड ऑन द बुक. द पेन इज प्लेस्ड ऑन द बुक. नाउ व्हाट आई डू इज, स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक दिस पेन, I apply the force and I place it on my hand. Listen to me very carefully, students. The pen is on the book, which is on the ground. Now what I do is, ये पेन को मैं उठाया, मतलब मैंने पेन पे फोर्स एक्ट किया, एंड पेन को मैंने अपने हाथ पे रख दिया. Now if you see, हाथ एंड बुक के बीच में काफी सारा डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है हाथ एंड बुक के बीच में. So now what I do is, students, when I lift the pen and I keep it on the hand, I am doing work. There is force, there is displacement. Yes or no? So I can say the work is done. I can say the work is done. Now students, whatever work is done in this case, this work is done against the gravitational force. Whatever work I do in this case, this work is done against what? This work is done against the gravitational force. So students, whatever work is done against gravitational force, ये जो work है ना, वो पेन में क्या हो गया स्टूडेंट्स? स्टोर हो गया in form of potential energy. क्या हो गया? ये जो work है, that gets stored in the object itself in form of potential energy. So gravitational potential energy
depends on the position of the object. It depends on what? It depends on the position of the object. अगर मैं ऐसे थोड़ा सा हाथ उल्टा किया ना तो पेन नीचे गिर जाएगा. यस yes? अभी यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे है ना हाथ मैंने कितना भी उल्टा किया, पेन नीचे गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनर्जी स्टूडेंट्स. बट अगर पेन एक हाइट पे होगा, अगर पेन हाइट पे होगा एंड मैंने उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया तो पेन क्या हो जाता है? गिर जाता है, बिकॉज इट हैज the gravitational potential energy. There's a energy stored inside the body when I do work against the gravity. So students, if I have to conclude, just remember the fact that gravitational potential energy, that is potential energy, it depends on what? It depends on the position of the object. What does it depends on? Gravitational potential energy depends on the position of object. Whenever you do work against gravity, whenever you do work against gravity, students, ये जो भी वर्क है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है in form of potential energy. Whatever work you do against gravity, that work is stored in the body in form of potential energy, which is nothing but called as gravitational potential energy. And gravitational potential energy किसके ऊपर based है? That is based on the position of the object. That is based on position of the object. Am I clear with this concept, students? This is a very important concept, and this is a very basic concept of gravitational potential energy, right? So again I'll repeat, gravitational potential energy, yeah, whatever we are learning, that is nothing but the potential energy itself. हम लोग किसके बारे में बात करें? We are not talking about elastic energy. We are not talking about elastic energy. हम लोग किसके बारे में बात करें? Gravitational potential energy, which is also called as potential energy. Potential energy is dependent upon the position of the object. Again I repeat, potential energy depends upon the position of the object. Whenever I change the position of the object, what I am doing is I am doing work against gravity. Whenever I change the position of the object, I am doing work against the gravity. जब भी मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करता हूँ, उसमें क्या होता है? उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाता है. व्हाट इज दैट एनर्जी? दैट एनर्जी इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? So I hope you understand what is potential energy, right? All right. So now students, when you understand potential energy, of course, अपने को क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखना है. क्या करना है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखना है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं? लेट अस लुक इनटू दैट. तो बहुत बहुत सिंपल सा चीज है स्टूडेंट्स. व्हाट आई कंसिडर इज देयर इज ग्राउंड. ग्राउंड के ऊपर बॉल था स्टूडेंट्स. क्या था? ग्राउंड के ऊपर बॉल था जिसका कुछ मास था. लेट अस से द मास वाज m. ग्राउंड के सरफेस पे बॉल था जिसका मास कितना है? m है. Now what I do is students, I pick up the ball and बॉल को उठा के मैं एक हाइट पे लेके आया. बॉल को उठा के मैं क्या किया? एक हाइट पे लेके आया. तो लेट अस से दिस इज द हाइट ऑफ द बॉल. मास तो चेंज नहीं होगा. मास इज गोइंग टू रिमेन एज इट इज. Mass is not going to change. Mass is going to remain as it is. Mass is going to remain m. तो पहले बॉल था पोजीशन ए पे, अभी बॉल गया पोजीशन बी पे. मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो गया h. राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिराइव एक्सप्रेशन for potential energy. Expression for what? Potential energy. Please understand this. This is a very important derivation for 2 marks. Expression for potential energy, and ये formula भी बहुत important है, बहुत simple है. Now if you try to see students, when I lift the object पे force apply किया जिसकी वजह से displacement हुआ. Meaning can I say students work is done? Can I say work is done? I can say the work is done.
राइट, व्हेन आई अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड, इसका मतलब है वर्क इज डन, राइट. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क? What is the formula for work? Please give me some time, students. Whatever doubts you have, we are going to clear it off. Just give me some time. Let me complete this expression first. All right. Can I say, students, can I say the work is done? When I lift the object, I am applying force. उस force की वजह से object ने displacement बताया. This means that the work is done. Now, what is the formula for work, students? Work is equals to force into displacement. Work is equals to force into displacement. Right. तो हमने देखा formula of work is force into displacement. Let us give this equation number 1. Now my question to you is, students, ये जो motion है, is it a vertical motion or horizontal motion? Is it a vertical motion or a horizontal motion, students? This is a vertical motion. Absolutely correct. This is a vertical motion. हमने last lecture में बताया था, students, when we have a vertical motion, force मा होती है, माजी होती है, स्टूडेंट्स. when we talk about vertical motion, ऊपर वाला मोशन, ऊपर नीचे वाला मोशन, वर्क जो है, इज इट माजी और मा? करेक्ट. फोर्स इज इक्वल्स टू माजी. व्हाट इज फोर्स इज इक्वल्स टू? फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. यहाँ पे नॉर्मल ए नहीं आता, यहाँ पे क्या आता है? जी आता है, माजी आता है, राइट. फोर्स इज माजी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन. जब भी ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाता है तभी फोर्स इज माजी. इट इज नॉट मा, राइट. ऑल राइट. तो यहाँ पे लेट अस गिव दिस फॉर्मूला फॉर फोर्स एज इक्वेशन नंबर 2, स्टूडेंट्स. Let us give this formula for force as equation number 2. All right, next. Now, do we have a displacement, students? What is displacement in this case? What is displacement in this case, students? What is displacement in this case? The displacement in this particular case is equals to the height of the object. Displacement in this case is equals to the height of the object. तो मैं क्या किया? Let us give this equation number 3. अभी बहुत simple है, students. In the first equation, W is equals to Fs. We know that ये जो force है that is equals to माजी, and ये जो displacement है, students, that is equals to h. So when I put equation 2 and 3 in 1, 2 and 3 in 1, तो क्या आएगा इक्वेशन, स्टूडेंट्स? वर्क डन का इक्वेशन क्या आएगा? What will be the equation of work done when I substitute this mg and h in equation 1? What will we have, students? W is equals to mg h. क्या आएगा? फोर्स के जगह पे mg आएगा, फोर्स के जगह पे mg आएगा, फोर्स के जगह पे mg आएगा, एंड डिस्प्लेसमेंट h के जगह पे h आएगा. So the work done का equation becomes mgh. Work done का equation becomes mgh. Now, students, this is vertical work, that is work done against gravity. Work done against what? Work done against gravity. And whenever we do work against gravity, students, that work gets stored in form of which energy, students? Whenever we do vertical work, that is work against gravity. Whenever we do vertical work, sorry, this is vertical. Whenever we do vertical work, that is the work done against gravity is stored in form of potential energy. So potential energy का formula क्या है? mgh. The formula for potential energy is mgh, right? The formula of potential energy is mgh. That is the potential energy of the object depends upon the mass, and it depends upon the height. Depends upon the mass and it depends upon the height. चलो, my question to you is, students, मन्नत है, मन्नत सेकेंड फ्लोर पे है एंड आर्यन शेट्टी है. मन्नत इज ऑन सेकेंड फ्लोर एंड आर्यन शेट्टी इज ऑन 10th फ्लोर. किसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? मन्नत के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, आर्यन के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है. एब्सोल्युटली करेक्ट, आर्यन के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है.
argon has more potential energy. Argon has more potential energy because उसका पोजीशन ग्राउंड के रेफरेंस से ज्यादा है. ही इज एट दी हायर हाइट, राइट. तो जितना हाइट ज्यादा उतना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, जितना हाइट सरफेस से कम उतना पोटेंशियल एनर्जी कम. तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन और इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट. Potential energy depends upon the position or it depends upon the height. I'll explain this particular expression again, students. Please look at this expression very properly. Let us look at the potential energy from the start. The potential energy is the energy of a body which depends upon what? Potential energy is the energy of a body which depends upon the position, which depends upon the position, right? अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है स्टूडेंट्स. सो व्हाट आई डू इज आई कंसीडर एन ऑब्जेक्ट जिसको मैं क्या किया, उठा के ऊपर लेके गया. ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट को हाइट पे उठा के लेके गया. सो इफ आई सी दैट, इफ आई डू दैट, व्हाट आई डू इज आई डू वर्क. वर्क है मतलब मेरे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, राइट. वर्क है मतलब मेरे पास फोर्स है एंड डिस्प्लेसमेंट है. यस. अभी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट्स तभी द फोर्स इज इक्वल्स टू माजी, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द हाइट स्टूडेंट्स. डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द हाइट. तो मैं क्या करता है स्टूडेंट्स, ये वर्क के फॉर्मूला में फोर्स के जगह पे मैंने mg लिखा एंड डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मैंने हाइट लिखा. तो ये जो वर्टिकल वर्क है स्टूडेंट्स, vertical work becomes mgh. What does vertical work become? The vertical work becomes mgh. So whatever vertical work we do, that is the work we do against gravitational force. Whatever work we do against gravitational force, I repeat again, जो भी मैं काम gravitational force के against जाके करता हूँ स्टूडेंट्स, वो वर्क हो जाता है convert in form of the potential energy. So potential energy is nothing but mgh. That is, it depends upon the position of the object. So this is the expression of potential energy, the very simple and the very important derivation of this chapter, one of the very important derivations of this chapter, right? Acha. Now based on this potential energy students, we have a small numerical. Let us look into this numerical students. Let us look into this numerical, right? Now let us solve this numerical together. Let us solve this numerical together, students. Now what I want you to do is, you can read the question, students. You can read the question and try to write the given data. And try to write the given data. बेटा अगर surface पे रहेगा, if the object is on the surface, what is going to be the potential energy of this pen as of now, students? The pen is on the ground. What is the potential energy? On the surface, of course, the potential energy is going to be zero, क्योंकि ऑब्जेक्ट का हाइट ग्राउंड से जीरो है. ऑब्जेक्ट का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज zero, therefore the potential energy is going to be zero. Daniel, I got the answer. You don't have to type it again and again. The potential energy on the ground is zero because height क्या है, zero है. Now students, we have a question in front of you. बहुत simple question है. Please try to write it on, or please try to solve this on your own. Again, this is a very simple question. This is a solved example in your textbook itself. Now the question says 500 kg water is stored in an overhead tank of 10-meter high building. 500 kg of water. अभी आप सोच रहे होगे पानी को 500 kg कैसा है, पानी तो लीटर में होता है ना. But students, you can measure the liquid in kilogram as well. You can measure liquid in kilogram as well. So don't worry about this, right? Yes, G दिया नहीं है, G दिया नहीं है. But do you know the value of G, students? Do you know the value of G? Do you know the value of G? Yes, what is value of G? G is 9.8 and unit क्या होता है acceleration due to gravity का, students? 9.8 के आगे क्या आएगा? 9.8 के आगे आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑलराइट, चलो हमने काफी एग्जांपल डिस्कस कर लिया है.
Now let us look into the actual example who did not understand. So students, what does the question say? The question says एक टैंक है, बिल्डिंग के ऊपर टैंक है, उस टैंक में पानी रखा है. कितना पानी रखा है स्टूडेंट्स? टैंक में पानी रखा है. पानी कितना रखा है? मास ऑफ मास ऑफ 500 kg. So what we have is students, what we have is we have mass of water given to us. We have mass of water given to us. अच्छा, वो टैंक है, कितने हाइट पे स्टूडेंट्स? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टैंक? द टैंक इज एट हाइट ऑफ 10 meters फ्रॉम द ग्राउंड. द टैंक इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर. तो स्टूडेंट्स अपने को हाइट भी दिया है. हाइट इज हाउ मच? 10 meter. हाइट इज हाउ मच? 10 meter. Now they have straight away asked us to calculate the amount of potential energy stored in the water. Calculate the amount of potential energy मतलब find क्या करना है? Potential energy find करना है. What are we supposed to find? Potential energy. अभी what we need to do is we need to identify the formula. Formula क्या है potential energy का? Potential energy is equal to, अभी हमने derivation देखा, क्या है potential energy equals to mgh. Potential energy is mgh. Now students, I know what is mass. I know what is mass. Mass is 500 kg. चलो SI यूनिट में टेंशन नहीं है. I know what is height. I know what is height. Height कितना है? 10 है. हाइट कितना है? 10 है. 10 मीटर है. अगेन हाइट भी किस में दिया है स्टूडेंट्स? SI यूनिट में दिया है. आई डोंट हैव टू वरी. बट स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, दैट इज जी का वैल्यू नहीं दिया. बट स्टूडेंट्स इन द लास्ट एग्जांपल, इन द लास्ट लेक्चर, we discussed what is value of g. The value of g is how much? 9.8 meter per second square. You have to remember this value students. ये 9.8 किधर से आया? We are going to look this into the next year. We are going to look 9.8 meter per second कहाँ से आया in next year, right? So as of now, what you know is you know m, you know g, you know h. Just substitute the values, students. Just substitute the values, everybody. Substitute the values, everybody. So what we have is 500 into 9.8 into 10. 500 into 9.8 into 10. तो स्टूडेंट्स 500 को मैं वैसे का वैसा लिखता हूँ. 9.8 को जब भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये जो डेसिमल है वो क्या हो जाएगा? आगे शिफ्ट हो जाएगा. एक कदम आगे, तो डेसिमल आगे शिफ्ट हुआ तो 9.8 का होगा 98. कितना होगा? 98. And students, when I multiply 500 by 98, can you tell me how much is it going to be? Correct, 49000. Please multiply and see if you get the same answer, students. So potential energy is 49000. Unit क्या आएगा students? Unit क्या आएगा? 49,000 क्या आएगा? 49,000. Joule क्या आएगा? Joule आएगा. या simply write it capital letter J, or simply write as capital letter G. So students, this is the potential energy based sum. Isn't it simple, students? If you know the formula, you can do it very easily. If you know the formula, you can do it very easily. All right. Anyone who has doubt, please raise your hand, students. Then we can move with the next part. Anyone who has doubt, please raise your hand, students. Anyone, if they have doubt, please raise your hands, or else we'll move with the next part. All right. I can see 3 hands raised. Achha, no hand raised. All right. Okay. So this is about the potential energy, students. All right. So this is about the potential energy. Now, students. All right. I can see the hands. Harshit Patel. Yes, Harshit. Tell me what's your doubt, beta. Hello, sir. बोल बेटा क्या डाउट है? Sir, please can you explain that potential energy again? Potential energy again. All right. Potential energy मतलब क्या होता है? जब भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है, whenever the position of the object changes, ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी आ जाता है. दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी.
whenever you do work against gravitational force, whenever you do work against gravitational force, whatever work you do, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है इन फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी, राइट? Yes, sir. All right. So let us now move with the next part of the chapter, students. Let us now move with the next part of the chapter. अभी ये चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत सिंपल लॉ एंड द मोस्ट इजीएस्ट लॉ ऑफ फिजिक्स, स्टूडेंट्स. Now, if I talk about energy, students, if I talk about energy, our universe is made up of energy, right? One second, Harmal, I'll ask you doubt later on. Let me complete this part now. Now, students, when I talk about the universe, we all know that the universe is made up of energy. अपना सोलर सिस्टम, अपने गैलेक्सीज, ये सारी चीजें हैं. It is made up of energy. Now, students, in this entire universe, it is said that जो energy है, the energy can never be created. ये energy जितना पहले से उतना ही रहेगा. And the energy can also never be destroyed. Energy can never be created, nor it can be destroyed. आप energy को पैदा नहीं कर सकते, ना ही उस energy को destroy कर सकते. But instead, what you can do is, you can convert it from one form to another. You can convert it from one form to another. And ये universe में जितना भी energy है, the total amount of energy in this universe, ये constant रहेगा. This energy in the universe is going to remain constant. This law is called as law of conservation of energy. What is this law called as? This law of energy is called as, law of conservation of energy. Now, what does this law say, students? This law says that the energy cannot be created. The energy cannot be created, nor it can be destroyed. The energy can neither be created, nor it can be destroyed. But what we can do with it, students? What we can do with that energy? We can convert it from one form to another. Right? तो हम लोग जितना भी एनर्जी यूज करते हैं, स्टूडेंट्स, हम लोग नए से बनाते नहीं है. हम लोग क्या करते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल, स्टूडेंट्स. अगर आपको भूख लगा, यू नीड टू कुक फूड, राइट? You need to cook food. Now, in order to cook food, which type of energy do you need, students? In order to cook food, which type of energy do you need? Absolutely correct. You need heat energy. अभी heat energy आप generate नहीं कर सकते, students. What you do is, you just convert it from one form to another. For example, what you do is, आप electricity लेते हो. क्या लेते हो आप? Electricity लेते हो. अगर आपके पास अवन रहेगा या आपके पास इंडक्शन चूल्हा रहेगा, स्टूडेंट्स, दैट अवन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट इज द हीट एनर्जी व्हाट यू यूज टू कुक द फूड. और इफ यू आर यूजिंग एलपीजी, लेट अस से, और इफ यू आर यूजिंग एलपीजी, एलपीजी में होता है केमिकल एनर्जी. एलपीजी में क्या होता है? केमिकल एनर्जी. जो आपका सिलेंडर है, स्टूडेंट्स, that is nothing but the chemical energy. When you burn that chemical energy is converted, students. That energy is, the chemical energy is converted into heat energy, which you use it for cooking purpose. So यहाँ पे students, आपने heat energy को पैदा नहीं किया. You did not produce it, students. Instead, you just converted it from one form to another. Right? तो एनर्जी को क्या करते हैं हम लोग? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन नॉट जनरेट इट, नाइदर वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट. वी कैन जस्ट कन्वर्ट इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट? अच्छा, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फ्यू डिवाइसेस, स्टूडेंट्स. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ फ्यू डिवाइसेस एंड देन we'll understand it in detail, right? We are going to understand few of the devices. So let us talk about fan, students. Let us talk about fan. अच्छा, फैन को कौन सा एनर्जी देता है? मैं फैन को कौन सा एनर्जी सप्लाई करता है?
करेक्ट, फैन को देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फैन को आई सप्लाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड फैन अपने को कौन सा एनर्जी देता है, फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट? एब्सोल्युटली करेक्ट, फैन कन्वर्ट्स इट इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फैन किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी या विंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यस, so electrical energy is converted into mechanical energy with the help of a device called as fan. Now students, if I take an example of loudspeaker students, loudspeaker, लाउडस्पीकर को हम लोग इनपुट कौन सा देते हैं, इनपुट में कौन सा एनर्जी देते हैं स्टूडेंट्स? लाउडस्पीकर में अगेन व्हाट वी गिव इज वी गिव इलेक्ट्रिकल एनर्जी, what we give is we give electrical energy, and लाउडस्पीकर के आउटपुट में कौन सा एनर्जी है? लाउडस्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? एब्सोल्युटली करेक्ट, लाउडस्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट्स इनटू साउंड एनर्जी, राइट? ऑल राइट, if I talk about students, if I talk about a cell students, if I talk about a cell, सेल में कौन सा एनर्जी होता है स्टूडेंट्स? जो सेल होते हैं ना, बैटरीज या सेल होते हैं, उसमें कौन सा एनर्जी होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, इनसाइड द सेल व्हाट वी हैव इज वी हैव केमिकल एनर्जी स्टूडेंट्स। व्हाट डू वी हैव? वी हैव केमिकल एनर्जी, एंड वो सेल केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट्स? Cell converts chemical energy into, absolutely correct, the cell converts chemical energy into electrical energy. So students, is there any point where we are producing electricity students, or we are generating any energy students? Is there anywhere we are generating electricity? No, what are we doing is we are just simply converting it from one form to another. We are converting it from one form to another. Now students, if I ask you generator, इफ आई आस्क यू जनरेटर, जनरेटर अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, जनरेटर अपन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले। जनरेटर इनपुट लेता है मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा एनर्जी स्टूडेंट्स? जनरेटर टेक्स इनपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी, एंड वो मैकेनिकल एनर्जी स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टूडेंट्स, it converts into electrical energy, it converts into electrical energy. So these are the different examples students, these are the different examples in which the energy is converted from one form to another. So this gives us with the law of conservation of energy, which says that energy can neither be created nor it can be destroyed. Remember this point students, the very important law of conservation of energy, which says that energy can neither be created nor it can be destroyed. Instead, what we do is we just simply convert it from one form to another with help of a particular device, with help of a particular device. So this gives us the law of conservation of energy. Now can you see students, bulb है ना, अगर मेरे पास लेटर से bulb है, so can you tell me the different energies we have? बल्ब के इनपुट में कौन सा एनर्जी गया? बल्ब के इनपुट में कौन सा एनर्जी गया? एब्सोल्युटली करेक्ट, बल्ब के इनपुट में गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड ये बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है स्टूडेंट? कैन यू टेल मी दैट? एब्सोल्युटली करेक्ट, बल्ब ग्लो होता है, बल्ब ग्लो होता है मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। एंड अगर मैं ये बल्ब को छुआ तो क्या होगा? इफ आई टच दिस बल्ब, क्या होगा? गरम लगेगा ना? वाई वाई वाई? बिकॉज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, शॉक नहीं लगेगा, बल्ब गरम हो जाएगा। yes or no? Your hands might get burned. The reason is the electrical energy is converted into, the electrical energy is converted into heat and light energy. So if you see, the energy is converted from one form to another, the energy is converted from one form to another, right? Acha, is there any doubt students? Is there any doubts you have? Is there any doubts you have? Are there any doubts? Sorry, are there any doubts you have? Please raise your hands if you have doubts. All right. All right. Yes, Yashraj. What's your doubt, beta? Vikroli Yashraj.
Yashraj. Yes, Jay Chavan. Ghatkopar Jay Chavan. Hello, sir. Yes, Jay, tell me. What's your doubt, beta? Sir, please you can repeat the elastic potential energy. Beta, don't get into that. एक जस्ट सिंपल मेथड क्या है, सिंपल चीज क्या है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट इलास्टिक होता है ना, जब भी उसको आप खींचते हो तो Yes. उसका शेप चेंज हो जाता है, राइट? शेप Yes. चेंज होता है मतलब आप उस पर एनर्जी फोर्स अप्लाई कर रहे हो जिसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी उसमें एनर्जी स्टोर्ड है टू कम इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इट हैज कैपेसिटी टू कम इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ये सब नो? Yes. अभी वो ओरिजिनल फॉर्म में क्यों आ सकता है? इलास्टिक मटेरियल अपने ओरिजिनल फॉर्म में क्यों आ सकता है? द रीजन इज उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर तेरे पास एनर्जी होगा तो ही तू काम कर पाएगा ना। तो कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप इज इटसेल्फ अ डूइंग रिवर्स वर्क। तो रिवर्स वर्क करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, समझा? हाँ। ऑल राइट। यस हरमल, Vikakoli Harmal. Beta, you can mute yourself. Okay, sir. Yes, Harmal, what's your doubt, beta? हाँ Harmal, can you hear me? Harmal, can you hear me? जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। जिसको डाउट है प्लीज रेज योर हैंड। ऑल राइट, घाटकोपर गजीन, प्लीज unmute Yes, sir. yourself and ask your doubt, beta. Yes, sir. How was energy created in the first place during the beginning of time? How is energy generated in first place? Now, if you would ask that, that's still a mystery which everybody is trying to find, right? There's a cosmos. Yes. There are a lot of things. We have come up with different theories like Big Bang theory, and no one really knows where this energy came from, right? There's no Yes. answer to it, right? Yes. So sir. it's a mystery which universe holds itself. Okay, sir. But whatever energy we have, what we do is we just use that energy. We cannot create any more amount of energy. Yes, sir. So this is what law of conservation of energy tells us. कि एनर्जी जितना है उसको ही अपने को यूज करना है, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट्स इट, राइट? Yes, sir. ऑल राइट। Thank So you, this sir. is about the law of conservation of energy. Any other doubts, students? Any other doubts? Any other doubts? I'll just go through the chats. If you have any doubts, I'll just go through it. All right. Achha, if you are done, you may leave, students. If you are done, you may leave. What is EE? EE मतलब electrical energy. EE मतलब electrical energy. वो short form है. All right. I do not see any doubts. All right. So what you can do is, students, you may leave. You can come for the next lecture, right? All right. Thank you, everybody. We'll wind up here. Yes, Harmal, do you have a doubt? no Harmal, do you have a doubt? no All right. Please unmute yourself. Students, you may leave. We are done for the lecture. We'll see you in the next lecture.